Some journeys are planned, and some journeys call you. Today, 3 riders leave behind comfort, traffic, noise, and head towards one of the strangest and most spiritual landscapes of the Himalayas, Gonbo Rangjan. भाई टैंक फुल, भाई फुल टैंक फुल जोश, बस वेदर ठीक होना चाहिए. No luxury, no backup car, just 3 motorcycles, mountain roads, and trust. The roads near Solang still feel familiar. Green mountains, tourists, smooth roads. But every kilometer ahead slowly changes the Himalayas and the riders. And then comes the gateway, the tunnel that changes everything. On one side, crowded Himachal. On the other, the cold desert of Lahore. Mountains no longer look friendly. They look ancient, silent, watching. जिस्पा पहुंच चुके हैं, थोड़ा पानी पी लें. अर्जुन जी, कैसा लग रहा है? मौसम बढ़िया है. जिस्पा पहुंच चुके हैं हम लोग. सामने बढ़िया माउंटेन, आप देखेंगे सामने बढ़िया वाले बर्फ वाले पहाड़ है. मज़ा आएगा और अच्छा रह रहा है. अभी तक तो बाइक में भी मज़ा आ रहा है. लोग कहते हैं कि टूरिंग के लिए नहीं बनी, पर परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं हो रही. बस क्रूज कंट्रोल लगा लो, बाकी सब आपको हाथ को रेस्ट मिल जाएगा. अदरवाइज़ तो सब ठीक ही चल रहा है अभी तक. तो मंजिल में पहुँच के देखते हैं क्या मज़ा आता है वो. अब ये पूरी जगह में कोई भी नहीं है, पूरा खाली पड़ा है टेरेन ये. और रात को यहाँ अच्छी खासी ठंड होती होगी. समय बिताने वाली जगह है. डेली लाइफ से दूर, ऑफिस के लाइफ से दूर, जीवन बहुत सही है. तो आगे चलते देखते क्या होता है. मज़ा तो बहुत आएगा. नहीं यार, कितने का है? एक ही प्लेट बहुत. चाय बनवा लो. चाय बनवा लो. भारी बैठ. Long rides aren't about destination alone. They are about the unspoken bond between riders, the nods, the waits, the shared silence. हाँ, साथ में 3 लोग. At these altitudes, even breathing becomes part of the adventure. The mountains test every rider, your machine, your patience, your fear.
अबे बैग गिर गया यार। बैग गिर गया बैग। हाँ अबे बैग कैसे गया? चल आगे चल। Up here, the world becomes quiet enough to hear your own thoughts. And then it appears, Gonbo Rangjan, a mountain that doesn't look real, like a monastery carved by nature itself. No network, no city noise, just mountains, wind, and the feeling that you've reached somewhere sacred. Some roads give memories, some roads change you. This was one of them. From Manali to Gonbo Rangjan, 3 riders came searching for adventure and found something much deeper.